Namaste, namaste, namaste. I, Anayasi Nagwanshi, welcome you all to this brand new video. I know मैंने एक वीक का ब्रेक लिया था. I was so exhausted but I'm excited making this video. मैं पूरे वीक यही सोच रही थी what should be the next topic और हमें next किस चीज के बारे में बात करनी चाहिए और next क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए that will help to make your life better. काफी सारे सोच विचार करने के बाद I came across कि मुझे आपको बताना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो शायद जाने-अनजाने में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए. And in this video, we are going to discuss about 10 lessons to learn before it's too late. The whole week I was in so much of guilt कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली, but it was necessary for me because I was going through mentally a lot, which means uploading video, editing, scripting, and it takes a lot of your energy in making content, planning, scripting, editing, posting, pre-production, post-production. There's a lot which is behind the cameras and you guys are not able to see it. And also managing my studies. And I'm kind of a person who likes her alone time. I also want to do my hobbies. I also want to dance. I also want to paint. I want to do all sorts of things. So when you have these much things to do in your life, you need time for that. And I was so exhausted, burnt out, like I needed this break so much. I'm glad I took that because I was so exhausted physically, even because managing all of these things at once can be a task. And it is a task because मैं बहुत ज़्यादा burnt out हो गई थी. I couldn't focus. My attention span reduced to like 2 seconds. I couldn't even look at my textbook for more than 2 minutes, and I was like, this is done. You need a break. And it's been over a month, and I mean, it's okay to take breaks. So this is a gentle reminder that if you feel like that you are overdoing something, you might feel like you are burnt out, just make sure to take a little break. You will accelerate with a lot of more productivity because when I'm seeing myself right now, इस break को लेने के बाद my creative fluids are flowing like crazy. I'm getting new ideas, a lot of things that I'm planning for future. It's been a lot. So it's something which, if you work like in creative field, you need constant ideas, constant thoughts, constant new patterns, or what's something that the people would like. So this is something I think resting is important. Talking about today's video, this video is generally based on the idea of how I would explain something to my 13-year-old self. Something a 13-year-old Anaya would understand and she would really work on it. Because I feel like while growing up, you need to balance a lot of things: your studies, your co curriculars, your sports, your life, your relationship, your family, your friends. There are a lot of things which come to and fro. And for you to balance all of it on the same platter and, live a healthy, balanced life, sometimes it can be difficult. So these advices and these tips would definitely help you to ace your life and live a happy life. These are the things I wish when I was about to enter my teens या in general कभी भी आते जाते किसी बड़े भैया सीनियर दीदी ने मुझे बताया होता कि ना just take a chill pill, it's all going to be okay and ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहेगा. I would be so much thankful for them. Sadly मेरे पास कोई ऐसा नहीं था, but for you I'm here telling you all about the secrets. You can't say them as secrets, but this is the truth of life. Some things might be brutal, some things you might feel like, oh my god, that's just too much, but this is what it is. Let's just get started. 1. No one is coming to save you. The faster you realize the statement, the better it is. Because हम हमेशा सोचते हैं ना कि ओके मैं रात को देर तक जग रही हूँ, मैं सुबह देर तक उठ रही हूँ, मेरा शेड्यूल नहीं है, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मेरा कोई प्लान नहीं है, देयर आर नो गोल्स, मेरा कोई टू डू लिस्ट में कुछ काम नहीं है, देयर इज नथिंग आई एम डूइंग इन लाइफ, एंड सडनली देयर इज गोइंग टू बी अ avatar of God on my door and he'll be knocking it and he'll be like, Anaya, it's your time to wake up and your life is going to change. That is not going to happen. There is literally no one coming to save you from the pit hole that you have created for yourself. The only person that is stopping you from reaching your full potential is your present self, is you, is only you. When you're rotting in bed, watching reels all day, that is the version of yourself that's stopping you from getting the things that you want in your life. And when I say it, I mean it with my full heart. When I was in this dilemma of everything is happening wrong with me, there was no one coming to save me, and there was not your friend, not your family, not someone whom you suppose you are very close with. No one, literally no one is coming to save you from all the mess that you have created. It's you who have to clean it, who have to get out of it, and you who needs to do certain things to achieve where you want to be in life.
आई नो इट कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड बट द पॉइंट हियर इज कि जो गलतियां कहते हैं ना, जो गड्ढा आपने अपने लिए खोदा है उस गड्ढे में आप खुद ही गिरते हैं। एंड आप अपने अभी टाइम वेस्ट करके वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम एंड watching reels, watching movies, watching web series, or whatever you are wasting your time in, video games, etc. No one cares if you will be successful in life or not. No one cares. Oh, you think your friend, they don't even also care if you fail in life. Do you think they will ever be proud to announce you in public that they belong to you or they are your friend? Oh my god, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए. Look at शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, they got such good grades. Now you are stuck in 90%, they got 95. You got 95, they got 100%. There is always constant comparison. द थिंग हियर इज कि हर इंसान को सक्सेसफुल आदमी के साथ लिंक होना अच्छा लगता है, बट किसी को भी किसी इंसान को सक्सेसफुल नहीं बनाना है, और बनाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज किसी का काम नहीं है, किसी ने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि ओके भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरा ठेका ले रखा है, वो मुझे रोज सुबह जल्दी उठाएंगे, वो मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, वो मुझे पढ़ाएंगे, वो मुझे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरे करेंगे एंड देन आई विल बी सक्सेसफुल एंड दे विल बी हैप्पी. कोई ऐसा नहीं करेगा. People have other jobs to do rather than focusing on yourself. It's you. You is only for you. And some of the people that you might think of your friends, जिनको देख के आपको लगता है oh my god ये मेरा कितना अच्छा दोस्त है ना, they are also praying for your downfall. So understand, before anyone's prayers get heard for your downfall, make prayers for your comeback. Your mind. The most attractive thing that can be with you is your mind. Your body is created by God. Your body is given to you. If you don't believe in God, some energy from universe gave you this body and now you're living in it. You didn't have any choice if you wanted this body, if you didn't want this body, if you want to switch character. It's not a game. This is real life, and you can't switch characters like that. So whatever you've got, you've already gotten. And something that you can change is your mind. Think about it. If your brain was in a color, what color would it be? If you consume a lot of murder, mystery, documentaries type of stuff, you might probably think, oh, my brain would be red in color. If you consume a lot of trash, you will think, oh, my brain would be black or brown in color. If you consume a lot of spiritual things, you might feel like, oh, my brain would be yellow in color. Think about yourself, what actually your brain thinks throughout the day and what the color is of your brain. And when you know that, from the color to be the darkest to the lightest, from the color to be as a happy yellow color or to be a sad black color, understand the game. Do you think that you are feeding your brain good things, that you're feeding your brain the important things that your brain needs to learn right now? The physics, chemistry, maths that you're learning is not going to save you in next 10 years. It is just for you to get into a good college. Understanding this can be a little tough because schools are teaching us nothing. They are teaching us the co-curriculums that were designed 20 years back. So now you think that if you're scoring 90% in your school exams and you think you're the most smartest person, you are the most dumbest person. I'm sorry, but this is the harsh reality. 3. No one is talking about you. It is hard to digest, but honey, this is truth. The more we run from it, the more we get heartbreaks and a lot of things. जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा. इट्स ओनली यू हु विल टेक यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन. और जब हमें लगता है ना कि हमसे कोई एम्बैरेसिंग थिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल यू फेल फ्रॉम स्टेयर्स, यू सेड समथिंग, यू लाव्ड एट द रॉन्ग प्लेस, यू स्माइल्ड एट द रॉन्ग टाइम, लॉट ऑफ थिंग्स, हम उस चीज को इतना ज्यादा पाइल अप कर लेते हैं अपने दिमाग में और हमें ये लगता है कि ये चीज ओवर हो गई है, अब सब लोग घर जाके मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे. वी आर ब्लडी नार्सिसिस्ट पीपल जिनको लगता है कि सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, एंड दैट्स नॉट ट्रू. सब अपने बारे में सोच रहे हैं. एवरी वन इज वेरी बिजी विद देयर लाइफ. नो वन इज थिंकिंग अबाउट यू. किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना पूरा दिन आपके बारे में सोचते हुए निकाल दे. नो वन इज दैट फ्री. और हम इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. जब कोई ग्रुप फोटो होती है, तब जब वो फोटोज वापस आती है, नाउ यू आर लुकिंग एट द पिक्चर एंड यू आर लाइक how I am looking at that picture, not how everyone else is looking. और आपको वो पिक्चर अच्छी लगी and you are looking nice in that picture, you will post it and your friends will be like, ये मेरी पिक्चर क्यों पोस्ट करी, I'm not looking good in that, but you posted it because you were looking good in that. So हर इंसान अपने आप को देखता है, हर इंसान अपने बारे में सोच.
हमें बचपन से इतना नार्सिसिस्ट बनाया गया है कि जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, किसी की लड़ाई हो गई वो तुम्हारी वजह से हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन में इम्प्लांट है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है और लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं और मैं ही इस चीज का रीजन हूँ। बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। अगर आपने कोई गलती कर दी है और थिंकिंग या आपसे कुछ एम्बैरसिंग थिंग हो गई है, कुछ गिर गए आप कहीं से, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यू फेल फ्रॉम स्टेयर्स, you think people will remember this after 1 year, 2 year, 3 year, didn't make an impact? क्या उनका कुछ लॉस प्रॉफिट हुआ आपके गिरने से? नहीं। 1% केसेस में ऐसा हो सकता है that your best friend might tease you for that, but they don't have bad intentions on it. The thing here is हम अपने आप को जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उतना इस दुनिया में कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ और बाकी लोगों के लिए वो अपनी खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी है। The faster you realize this, the faster you will be able to break yourself from expectations. Because हम expect करते हैं, oh my god, ये person ने मेरे बारे में सोचा होगा ना, they'll do this for me, they'll do that for me, and then you have a heartbreak. Expectation is the root for heartbreak. A night is followed by a day. आई नो, अभी बहुत टफ टाइम्स चल रहे हैं, जो आप चीजें चाहते थे वैसे नहीं हो रही हैं, यू वांट टू डू समथिंग, वो चीज नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चली, सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, यू वांट टू क्विट, आपको सब मन करता है मैं छोड़ छाड़ के सब छोड़ दूं, सब मैं कहीं दूर चली जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी दैट टफ टाइम्स सबकी लाइफ में आते हैं एंड टफेस्ट टाइम क्रिएट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। हम बोलते हैं ना कि ओके एक लोहे का पीस है, उसमें दे आर हैमरिंग इट अगेन एंड अगेन और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। इट इज अ जर्नी, इट इज अ प्रोसेस दैट मेक्स यू द स्ट्रॉन्गेस्ट। द पीपल विद द हार्डेस्ट ट्रॉमा आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज वो जर्नी, वो दर्द, वो पेन दे हैव एक्सपीरियंस इट ऑलरेडी, सो एनी पेन कंपैरिजन टू देयर पेन दैट हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वो उस कंपैरिजन में कम हो जाता है। थिंक अबाउट इट इन अ वे दैट गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर सक्सेस। He is preparing you to all the things that you want in your life, to all the things that you deserve, that will actually help you to move forward in your life. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आई नो इट इज वेरी इजी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली, नॉट सीइंग रिजल्ट्स। फॉर मी दिस कैन बी दिस यूट्यूब चैनल, constant effort, money, time, energy, everything going in drain, but it's not. It is being collected somewhere because एक दिन कभी ऐसा आएगा one of my video will blow up. Maybe this one, maybe the next one, maybe after 1 year, maybe after 2 year, I don't know. But what I know is that I have to put constant effort every single day to achieve what I want. I can't be just sitting in my bed, rotting, crying about my situation. Oh my God, I'm not getting views. That is literally not going to happen. That I will pray, oh my God, Bhagwan ji, मुझे अच्छे views मिल जाएं. My subscribers are in lakhs. I'm getting millions of views. That is not going to happen. You have to put effort to get somewhere in your life, to get everything that you want. It is easy, but it is difficult when you are constantly thinking about it and not acting on the things. 6. Appearance does matter. कितना भी हम इस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं कि अपियरेंस डजंट मैटर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज ऑल क्रैप बिकॉज इट डज मैटर। मैंने बताया है 3 सेकंड लगते हैं फॉर अ पर्सन टू जज यू, टिप टू टो वो आपको देखेंगे एंड दे विल लाइक ओह दिस पर्सन इज लाइक दैट, आपको कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट कर। आवर ब्रेन लाइक्स टू फाइंड पैटर्न्स इन थिंग्स और हम चाहते हैं कि हम किसी इंसान को देख के उसको एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रख दें, ओ ये इंसान तो इसकी तरीके का होता, इस इंसान के ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते होंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यू वर्क फॉर एमएनसी राइट, आपकी जॉब चल रही है, नाउ यू वांट टू टाई अप विद अनदर बिग कंपनी, नाउ योर बॉस सेज टू यू हे अरेंज अप अ मीटिंग, गो टू देम, कन्विंस देम टू टाई अप विद अस एंड नाउ यू विल गेट अ प्रमोशन। नाउ यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर इट, आप दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, यू आर टॉकिंग विद द टीम, यू आर मोटिवेटेड, यू आर डूइंग एवरीथिंग, और जब मीटिंग के दिन की बारी आती है, यू शोड अप इन अ पजामा सेट, डू यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन यू वुड लीव ऑन द पीपल जो मीटिंग करने के लिए आए हैं? Everything will go to waste. There's a reason कि ड्रेसिंग कोड क्यों बना हुआ है, there's a reason why there's a uniform in school, there is a reason कि आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, now you can wear anything you want, there's a reason कि आप कहीं प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हो, you need to wear like formals, suits, etc. The thing here is the energy, efforts and time you put in getting yourself look good will actually reflect. किसी भी इंसान को आप देख के बता सकते हो कि ये इंसान अपनी अपीयरेंस में टाइम देता है या नहीं देता है, and that is a very plus factor. It's not just about getting branded clothes. You can even look good in Sarojini के कपड़े, but the thing here is you need to understand the sense of fashion and the sense that what things look good on me and what not.
It's not just about clothes, it's also about getting yourself basic hygiene. There are some rules which were made to be followed, not to be broken. We all want to be a rule breaker. Makes zero sense. 7. Discipline. How easy is to say this word, discipline, but it is as hard as climbing a mountain. You need to realize the importance that discipline word comes with it and understand the why behind it. You want to be disciplined at what? Certain things, certain goal that you want to achieve, certain amount of money figure that you want, certain amount of house you want, certain amount of car that you have. Oh my god, this is my dream car, certain amount of lifestyle that you want to live. Understand what you are running behind and then understand the why behind it. Why you want to do this. For example, you want to take your family out of the financial situation that you are right now in. Maybe you want to do something for your sibling. Maybe you want to do something for your grandparents. Maybe you do want to do something for your society. Maybe you want to make your parents proud. Understand the why. And the more bigger the why is, the harder your will to do certain thing. And 7. Make your life interesting. हम करियर पे ध्यान दे रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन हमें फ्यूचर में क्या करना है, बट द एक्चुअल जॉय इज that you are enjoying the moment. Do something which makes you feel happy. Work is not going to be happy for you always. Something that inspires you, something that you wake up in morning with a face full of smile, thinking, oh my god, I will be able to do this today. That can be as simple as the hobby that you quit in your childhood because you didn't have enough time for it. Maybe the sport that you stopped playing. It can be literally anything that holds the joy and that, heals the inner child in you. That is important. Very important. I wish someone would have told me just enjoy these years, these teenage years. Don't be so hard on yourself and always constantly thinking about your career, etc. Just enjoy your life a little bit. That would have been so much more easier for me to cope up with that feeling. But I'm here for you and I'll tell you anyways. This is a gentle reminder for you to actually make your life interesting. Reading books, watching movies, web series. I know I said it, ये करना गलत है, but there should be some part of you आपको पसंद है, you enjoy, आपका शौक है movies देखना, that can be your thing. But if you're wasting time, that's a different thing. Understand the difference between both of the things. Make your timetable in such a way कि आपको दिन में कम से कम एक दो ऐसी चीजें करने को मिले which truly brings joy in you, जो अंदर से आपको खुश करती हैं, that things which you feel the most happiest about. It is important to be happy and we all deserve to be happy. You, I, we all deserve to be happy. So do something which makes you feel happy. 8. The journey. हम बहुत ज्यादा भागते हैं behind the result. Oh, one day I'll reach million. That will be the most happiest day. That's when I know I made it. ऐसा नहीं है. You need to embrace the journey. Every single day you showed up with smile on your face. आपने अपनी खुशी से वो काम किया है. स्कूल खत्म होने के बाद हमें रियलाइज होता है how good days those were. Why? बिकॉज उस टाइम पे हम ये नहीं सोचे ओ मेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे, ओ आई फेल्ड इन दैट क्लास, ओ माय गॉड दैट टीचर डिडंट लाइक मी. ऑल यू थिंक अबाउट द स्पेशल मेमोरीज दैट यू क्रिएटेड विद योर फ्रेंड्स, और ऑल यू केयर अबाउट इज कि आपने क्लास के बीच में कैसे लंच छुप छुप के खाते थे, that the picnics that you went on with your friends, those will be the moments that you will cherish in your life forever. हम सब बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो गए. कहाँ मैं अभी सोच रही थी कि मेरे को 8th क्लास में जाना है. This corona thing happened. It felt like that past few years just vanished off. इतनी जल्दी चले गए, पता ही नहीं चला. And now when I look back, all I remember is those smiling faces of my friends playing in the ground, badminton, kho-kho, volleyball, basketball, all the activities that I used to love doing as a child with my friend. It's not important to be always at the top. It's not important to always reach the end point. The thing that is important, to enjoy the journey. रास्ते भर आपको कितने सारे ऐसे लोग मिले that you might not remember but they give you a good time. उनके साथ भले ही आपको कुछ याद ना हो but they made you happy for at least a second. हमेशा हम भागते रहते हैं to understand, oh my god, I want to reach there, achieve this, do this, be this and that. But you need to realize that journey is what makes everyone different and special. मेरी जर्नी आपकी जर्नी से बहुत अलग होगी, आपकी जर्नी मेरी जर्नी से बहुत अलग होगी. That is what makes us different and unique. Embrace that journey. Embrace life. 9. Prioritizing your mental health. जितना हम फिजिकली अपने आप को फिट करने में इतनी एफर्ट्स डालते हैं, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी सारी अब तो
अलग अलग चीजें आ गई हैं इन द इंडस्ट्री, योर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, यू कैन सी अ कंप्लीटली रिप्ड मैन विथ सिक्स पैक एब्स, मसल्स, बट व्हेन ही स्पीक्स फील्स लाइक यू वुड प्यूक, बिकॉज वो इतना खराब, इतना गंदा बोलते हैं। देयर मेंटल हेल्थ इज डिस्ट्रॉयड। यू नो, ऑलवेज यू सी कि भाई वो अरिजीत सिंह के गाने चला के गाड़ी में रो रहे हैं, दे डोंट हैव एनी मोटिवेशन इन लाइफ, all they do care is about is making their damn body. बॉडी किधर लेके जाओगे, दिमाग कहीं लेके जाओगे। आई नो बॉडी बनाना टू लुक गुड, अपीयरेंस डज मैटर, मैंने बताया काफी सारी चीजें हैं। आई एम नॉट कॉन्ट्रोडिक्टिंग द फैक्ट्स दैट मैंने अभी जो पहले बताया, बट अंडरस्टैंड द पॉइंट। इफ यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, how will your life will be stable? You're constantly in depression, anxiety and what not. You're fearing yourself. आपको कहीं सोशल स्किल्स में डर लगता है, कहीं मीटिंग में नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, जीरो सोशल स्किल्स, कोई फ्रेंड्स नहीं बचे हैं, इंट्रोवर्ट हो, अंदर ही अंदर बातें रहती हैं, किसी से कुछ शेयर नहीं करते हो, मेंटल हेल्थ इज गोइंग डाउन द ड्रेन। एंड एज आई सेड, no one is going to save you. It's you who will take yourself out of that thing. Therapy लो, talk to someone, get a friend, do some things which will mentally make you feel happy, and that's what I said. कुछ ऐसी चीजें करना जो आपकी लाइफ में आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, which genuinely makes you feel happy about your life, can literally drastically improve your mental health condition. मेंटल हेल्थ हम बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, स्पेशली इन इंडिया। इफ यू फील लाइक कि मुझे कुछ हेल्प की जरूरत है, आपको हेल्प की जरूरत है, सिग्मा अल्फा मेल फीमेल बनके आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहोगे, यू आर गोइंग डाउन द हिल। आई एम सेइंग इट अगेन, मेक श्योर यू पुट इनफ टाइम ऑन योर मेंटल हेल्थ। और नेक्स्ट चीज भी इसी से रिलेटेड है, 10 ग्रेटिट्यूड। वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, उसका थैंक यू बोलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, आप एबल हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो थिंग दैट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर। इतने सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटली फिजिकली स्टेबल नहीं है, दे विश फॉर कि उनकी आपकी जैसी लाइफ होती। यू सी पीपल वॉकिंग डाउन ऑन द स्ट्रीट्स, वो सोचते होंगे, आप जब गाड़ियों में जाते होंगे, यार काश मैं उस गाड़ी वाले की जगह होती या होता। यू नीड टू रियलाइज ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव, some or the other person on this planet might not have it, and you are lucky to have it, so be grateful for it. Being grateful is very big part, और लोगों को आजकल बिल्कुल grateful होना नहीं आता। They think, oh, I deserve the silver spoon, I deserve the golden spoon. You should be grateful for each and everything, your pen, paper, copy, this light, this phone, laptop, or whatever you're watching this on. If you have this, you have access to most of the things which 80% of people don't have. You don't even realize how much people are below the poverty line and how lavish, ultra luxury lifestyle you are living according to them. Being grateful can start as simple as writing down the 5 things that you feel like that, God, I'm thankful for you giving me this. And the first thing, when you do this, you're literally charging your brain to think in a positive direction. You're feeding your brain the things that you have, the things that you're grateful for, how happy you are, how colorful the life is. You're enjoying every moment. And that's when you are happy, enjoying the moment. You're being present and being happy, soaking in all the things that are going around you. I'm just a simple girl like you, just your friend, maybe your best friend, or whatever you like to call me, your social buddy. We all have different goals and plans for our lives, for the things that we want to do, how we see ourselves in next 10 years. You need to realize कि इन सब भागा दौड़ी में don't leave yourself behind, because you will regret it. अपने अंदर के उस बच्चे को, अपने अंदर के उस टीनेजर को हमेशा जिंदा रखना. Always feed up with them, with your old friends, old memories, old things which used to remind and give you nostalgia of certain things. It is your reminder to be happy, healthy, stay safe. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Jai Shri Ram.